Good morning, children. In our previous period, we have seen our topic, that is adjectives. The word that tells you something special about that person, place, animal, or thing, that is called adjective. Okay. Now, next topic is articles. So, what is article and why we use them in our sentence? Okay. So, as articles, we use a and another article is also there, but just now we are not going to learn that is the. Okay, so these are articles, and in our sentence mostly we use these articles. Without articles we can't write sentence. Okay, so what is the use of these articles? And why we mentioned these articles before noun? We put these articles before noun, but why? What is the reason, children? This article shows you the quantity of any noun. A or and we use for singular nouns. See, a and used for singular nouns. So it shows you the quantity of that nouns. Nouns वो चीज़ कितनी है, that object और that जो भी है चीज़ जिसके पहले हम लोग a और and लिख रहे हैं वो कितना है, it shows that. Okay. ए और एन से हमें पता चलता है. ए और एन कब यूज़ करेंगे? ओनली फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट. सिर्फ सिंगुलर नाउन होता है, देन ओनली वी कैन यूज ए एंड. ओके, so the most useful purpose of this articles to show you the quantity, how many, and if there is not a or and, that means they are plural in number. We can understand that. Okay, so see, a and see here what I have written, a and for singular nouns. So why then we use a and both for singular nouns? It is sufficient to write only a for any single nouns, है ना, या फिर and for any single noun. Okay, no, exactly we can't write that because they are for different nouns. And what is the rule for that? See, a we can use a article for the nouns begin with consonant. Here, children, we have learnt that consonant and vowel in our first lesson of English grammar, that is the alphabet. In alphabet, we have 26 letters total, 5 vowels. They are A, E, I, O, U, and 21 consonants. Okay, so whenever the noun begin with consonants, we can use A in front of them, before them. Okay, for example, a cat, because here noun begins with consonant C, and that's why we can write here A. Okay, and see here there is no S, that means this is a singular noun. That's why we can write here A article. Understood? And now see next. And for noun begin with vowels. Whenever the noun begins with vowel, we can write there and. Understood? For example, an owl. Just in our lesson we have seen that name owl. So owl, it begins with O vowel, and that's why it is singular. There is no S. That's why it is singular, and therefore we have written here and before that owl. Okay, clear? जब भी कोई नाउन वॉवेल से शुरू होता है और सिंगुलर है, उसके आगे यस नहीं है, तो आप उसके पहले एन लगाते हो. और जब भी कोई नाउन कंसोनेंट से शुरू होता है और सिंगुलर है, तो आप उसके पहले ए लगाते हो. ये ए और एन मतलब एक. ओके, अ कैट मतलब एक ही कैट है, एंड आउल मतलब एक ही आउल है. वी कांट राइट इन दिस वे. एंड owls, this is wrong. If the noun is plural, you can't write there and before it. This is wrong. Okay, and we can't write this cats. प्लूरल फॉर्म को हम लोग ए और एन कभी भी नहीं लगाते हैं. ओके, दिस इज आल्सो रॉन्ग. इट इज ओनली फॉर singular nouns. Understood? Okay, so see here I am going to explain you. This is the explanation scene that I have explained. So directly I am going to our exercise. Okay, see here some examples are given to you: an apple, an egg, an igloo, an orange, and
umbrella. Okay, and a ball, a cat, a dog, a firefly, a zoo. Okay, next here, air, that means an air, a doctor, an egg, a milk. Okay, then night, here we can't write here a milk. Okay, then night, a knight, and officer. Understood? So this is we have completed here. Somewhere you have to write a, and somewhere you have to write an, and somewhere you don't write anything. Okay, so see that I am going to explain you. See, if you have book, you can see in your book. I am only reading this. Okay, 47 page number. Rajesh is, I am just showing, but better way you can see in your own book. Okay, Rajesh is a firefighter. He puts out fires with water. He uses a water house. Rajesh rides a fire truck. Okay. Next is, one day Rajesh got a phone call from John. John and Rajesh were friends. इसको ए और एंड नहीं लगा सकते because there is friends. Okay. John told Rajesh that a cat was stuck in a tree. He wanted Rajesh to help him. Rajesh went to John's house. He took out a ladder from his fire truck and climbed the tree. He gave the cat an egg to eat. वो cat ऐसे निकल नहीं रही थी. That's why he gave that cat an egg to eat and then caught him and brought him down. इस तरह से वो जो पेड़ पर चढ़ गई थी उसे हमने निकाला है ना. Okay. So children, here see what is there. Working in pairs, physical appearance of someone you know, your parents. You can talk about family members or classmates. Okay. इंडिकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. आप अपने पार्टनर के साथ ये टॉपिक पर बात करोगे. बॉडी बिल्ड कैसा है आपके, कोई भी घर का कोई भी पर्सन ले लो, पेरेंट्स ले लो, उनके फेस, उनकी आईज एंड उनका हेयर, ये सारे क्या होता है ये सब बताएंगे. तो वर्ड्स क्या हो गए, एडजेक्टिव्स. एंड बाय यूजिंग सम एडजेक्टिव्स यू कैन एक्सप्लेन एनी पर्सन. आपके घर के किसी पर्सन को आपको डिस्क्राइब करना है आपके पार्टनर के साथ. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ सी हियर, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट अ पर्सन यू लव वेरी मच. राइट व्हाट यू लाइक अबाउट हर और हिम. आप जिस कोई व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो उसके बारे में आप 2-4 लाइन्स लिखिए. मे बी ही और शी, वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो, मतलब आपके रिलेशन में आपके घर में कोई पेरेंट्स हो आपके, वो फादर ग्रैंडफादर हो या मदर या ग्रैंड मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी है, यू कैन राइट इट. ओके. नेक्स्ट, so children, here this lesson is about all nocturnal animals. So it is the project for you. Place image of animal here. You have to paste the picture of that animal that you can see at night. Nocturnal animals जो है उसका picture यहाँ लगाना है. You have to paste 4 pictures of that nocturnal animals and see here what here you should write their names. उसके नीचे, पिक्चर के नीचे उसके नाम लिखने हैं. एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दीज एनिमल्स. और उस एनिमल के बारे में, जैसे हमने देखा बैट का, बैट क्या बोलता है, आई कैन सी एट नाइट ओनली. एंड व्हाट द आउल सेज दैट आई कैन हंट एट नाइट ड्यूरिंग नाइट टू ईट. वो रात में ही शिकार करता है. इन द सेम वे आप जो भी रात में दिखाई देने वाले एनिमल लिखोगे उसका कुछ स्पेशलिटी आपको यहाँ लिखना है. ओके. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस एनिमल्स, 1 और 2 इन नंबर. ठीक है ना, 1 या 2 या 3 अगर आपको मिलती है उसके बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यू शुड राइट हियर. अंडरस्टूड. सो चिल्ड्रेन, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन 5. ओके. So bye children, and that question answers I will explain in Zoom class. Okay, bye children.